Now comes the part 3, relation between Cp and Cv, that is the Mayer's formula. We have to prove it, derive it, Cp minus Cv is equal to R. We know that Cp is greater than Cv. Because why the Cp is greater than Cv, which we have discussed in the earlier class, in the earlier video also, Cp is having R more than Cv because that extra factor is there. That is in case of Cp, the more work is said to be done. वर्क हो रहा है इसमें सीपी में, दोनों केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम में वर्क डन नहीं होता है, सीपी में वर्क डन होता है. तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी. नाउ द आवर पर्पस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो is that to derive that Cp minus Cv is equal to R. Now helping tools that is required in case of derivation. dq is equal to du plus dw, first law of thermodynamics. Pv is equal to nRT, ideal gas equation, ये मालूम है. dq is equal to m into c into dt, amount of heat given to a system or extracted, m into c into dt. And dw is equal to pdv. That is the helping tools. These are important. Now let us consider a gas, ideal gas having n moles, and this initial condition of this gas, ideal gas, which we have taken is your P is your pressure of the gas, initial state, T is the temperature, and V is the volume, initial thermodynamic coordinate. Now, how we are going to start? Step 1. From first law of thermodynamics. The differential form. dq is equal to du plus pdv. That we know. Or dw, that is first equation. Let the ideal gas is or being heated at constant volume. Constant volume means dv is equal to क्या हो जाएगा 0. मान लेते हैं constant volume में से आइडियल गैस को हम हीट किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा इक्वेशन 1 में dq is equal to du plus 0, वर्क डन नहीं होगा, dv 0 और dq, तो dq इज इक्वल टू क्या हो गया du, 0 हटा देते हैं. इन प्लेस ऑफ dq वी कैन राइट m into, we know that q is equal to m into c into dt होता था dq. m यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. मान लेते हैं n नंबर ऑफ, यहाँ क्या था मास, तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ मोल्स है, इसीलिए n ले लिए, m c इंटू dt. यहाँ c कौन सा होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सी वी सफिक्स इज इक्वल टू डी यू. राइट, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ऑल क्लियर. नेक्स्ट, अभी हम क्या कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट को हीट किए, क्या आइडियल गैस को हीट किए. Ideal gas is being heated at constant volume. Then this is the condition we got this. Let the ideal gas is being heated. Next condition, at
कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर अभी हीट हो रहा है, सो यहाँ पर इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। तो डी क्यू इक्वेशन 1 था डी यू प्लस पी डी डी डब्ल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा उसी तरह से एन सी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। नंबर 3 ना, अब हम लोग दोनों, अब ये एक इक्वेशन मेरे पास है, एक ये है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का था, ये कांस्टेंट प्रेशर का। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट कंबाइनिंग फॉर द कंपैरिजन। सीपी और सीवी को कंपेयर करना है, तो हम डी यू का जो वैल्यू आया था कांस्टेंट वॉल्यूम को का, उसको इस यहाँ पुट करेंगे। देन व्हाट विल हैपन, एन सी पी डी टी इज इक्वल टू डी यू का वैल्यू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, राइट, इतना आया। इसको दे दिए नंबर 4। अब याद रखना ये नंबर 4। नाउ वी नो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, हमको अब मेरा टारगेट है पी डी वी का वैल्यू निकालना। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हम जानते हैं, राइट। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग और partially differentiate P dV is equal to, अब यहाँ पर P dV इसको partially differentiate कर रहे हैं, तो ये P dV प्लस V dP भी होगा, is equal to N R dt, इतना हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर था, कांस्टेंट प्रेशर था, तो dP क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर अब ये वाला इक्वेशन पी डी वी प्लस 0 इज इक्वल टू एन आर डी टी, कितना आया एन आर डी टी। अब ये इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 का जो वैल्यू आया पी डी वी का, उसको 4 में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या बन जाएगा, एन सी पी डी टी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस ये हो जाएगा पी डी वी की जगह में एन आर डी टी। डी टी सब कॉमन लेके हटा दिए, यहाँ पर क्या एन सी वी को इधर कर दिए, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, उसमें कर दी एन आर और एन कैंसिल, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। दैट इज द मेयर्स फॉर्मूला, where R is the universal gas constant और R का वैल्यू होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, R का वैल्यू होता है। दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द मेयर्स फॉर्मूला। जस्ट यू recapitulation is required. dq is equal to du plus pdv. How we are going to do it? First step is to ideal gas being heated at constant volume, dV is equal to 0. So ultimately when the dV is equal to 0, so dq becomes du. So in place of du, I am just writing n cv dt. Why? Because dq is equal to mc dt.
In place of CE, we are writing CV, and let the ideal gas is being heated at the constant pressure. Constant pressure means dP becomes 0. Constant pressure. So ultimately, what happens? The same thing. For equation 1, first equation of first law of thermodynamics, NCP dt, constant pressure, du plus pdv. NCP dt is equal to, in place of du, I am putting the value. Now the combination is there, NCV dt plus pdv. Now our purpose is to find the value of the pdv. So from the ideal gas equation, PV is equal to nRT. Here n constant, R constant, and T is variable. Now P and V, P dV. Here P first functions differentiation of second plus second function differentiation of the first. That is the partial differentiation. Now here dP, as we are expanding in this particular mode of expanding the gas or heating the gas at constant pressure. So dP is equal to 0. So 0 into anything 0. So P dV is equal to nR dP dt. Now put this particular value in equation 1. So ultimately Cp minus Cv is equal to R. That is the Mayer's equation. Okay.